Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. I welcome you all on behalf of Divisional Public School and College, Sahiwal. This is Javedan and I am around for grade 9 English lesson 9. Today's lesson is chapter 4 Hazrat Asma R.A, page number 32. Here are a few parts for the lesson. Let's see. Discussion of glossary, translation of lesson, lesson and assignment. Let's move to the next slide. A few learning outcomes are in front of you. By the end of the lesson, students will be able to learn synonyms, translate the lesson, and make sentences. Let's move ahead. Here is a glossary in front of you which is given in your book as well. Let's go through all the words. Number 1 is perilous. Perilous is an adjective which means dangerous and the synonyms are serious or risky. Number 2 is venture. Grammatically, venture is a verb which means undertake. Synonyms can be adventure or menace. Number 3, furiously. Grammatically, furiously is an adverb which means angrily. The synonyms can be hot or steamed up. Number 4, refugee. Refugee is a noun that means place of safety. The synonyms can be sanctuary or shelter. Next is instantly. Grammatically, instantly is known as adverb which means immediately. The synonyms can be bang or directly. Number 6 is constant. Constant is an adjective which means regular. The synonyms can be loyal or steadfast. Next is detect. Grammatically, detect is a verb which means to find out. Synonyms can be dig out or locate. Number 8 is ripe. Ripe is an adjective which means mature. The synonym can be funky or smelly. Ninth word, which is the last word of the glossary, is reveal. Reveal is a verb in the grammar which means show. Synonyms can be bear or discover. Let's move ahead. Here we have paragraph number 1 in front of us. Let's go through it. The Holy Prophet ﷺ and his close companion Hazrat Abu Bakr Raziallahu Ta'ala Anha migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. AD is usually known as Anno Domini or commonly a common man usually says after death. It means when Hazrat Isa alayhi salam was moved from this world. पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, they got furious. जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तर्के वतन, माइग्रेशन इज़ तर्के वतन, का इल्म हुआ या मालूम हुआ या उन्हें ख़बर हुई तो वो तैश में आ गए. They got furious means तैश में आ गए. The chiefs were determined more than ever to find them out. सरदार उनको तलाश करने के लिए पहले से भी ज़्यादा पुरअज़्म हो गए. मोर दैन डिटर्मिंड, पहले से भी ज़्यादा पुरअज़्म. Alright, they offered huge reward and bounties for their capture, dead or alive. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तारी के लिए बहुत बड़े इनाम व एज़ाज़ की पेशकश की.
یا بھاری انعامات اور زر کثیر کی پیشکش کی. I hope it is clear till here now. Let's move ahead. Here we have paragraph number 2 in front of us. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anha. اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی. حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard. اس سلسلے میں یا اس معاملے میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفید خدمات پیش کیں یا سر انجام دیں. She prepared food for this journey. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. جب کچھ اور نہ مل سکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی کمر بند سے کھانے کو اونٹ کی پشت پر باندھا. For this service she was given the title of Zatun Nataqeen by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اس خدمت کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات الناطقین کا لقب دیا. Guys, just make sure how to write it especially in Urdu. ذات الناطقین. Let's move to the next slide. Paragraph number 3. During this perilous journey, اس انتہائی خطرناک سفر کے دوران یا اس پر خطر سفر کے دوران it was very difficult for anyone to supply food to the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی کے لیے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا فراہم کرنا انتہائی دشوار تھا. It was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہلکی سی غلطی ایسی نازک صورتحال میں یا معمولی سی خطا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں مبتلا کر سکتی تھی. This grand task was undertaken by Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عظیم کارنامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدگی سے سر انجام دیا. Every night, ہر رات, with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. ہر رات وہ کھانا لپیٹتے ہوئے یا کھانے کو لپٹے ہوئے کھانے سمیت خاموشی سے ان سنگلاخ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاتی. The rugged mountains is سنگلاخ پہاڑ. سنگلاخ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں جن میں غار سور واقع تھا. She took care of the minute detail in accomplishing the task. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے معمولی سے معمولی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا یا احتیاط برتی. Minute is معمولی سے معمولی, انتہائی معمولی احتیاط. All right. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. Being detected means تعقب کیے جانے کا مستقل خوف کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رات کے وقت پتھریلے راستے سے گزر کر جانا کس قدر دشوار تھا. How difficult is کس قدر دشوار تھا. And being detected, تعقب کیے جانے کا خوف. Fear of being detected, تعقب کیے جانے کا خوف. Let's move to paragraph number 4. On the night of the migration, ہجرت کی رات, a tribal chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ's home. ہجرت کی رات کفار کا سردار ابو جہل انتہائی طیش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھا. He began knocking at the door violently. وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا. Violently means aggressively. Addressing حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے,
He demanded, उसने इस्तफसार किया, उसने सवाल किया, उसने पूछा, Where is your father? तुम्हारा बाप कहाँ है? She politely replied, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शाइस्तगी के साथ जवाब दिया, How would I know? मुझे कैसे मालूम होता? This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma रज़ी अल्लाह ताला अन्हो. ये जवाब हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दानिशमंदी और जुरात को ज़ाहिर करता है. She did not make a statement that would give him a clue. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कोई ऐसी बात ना की जिससे उसे कोई इशारा मिलता. Clue is इशारा, signal. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने महज सवाल के जवाब में सवाल कर दिया जिसने अबू जहल को आग बगूला कर दिया. Infuriated, आग बगूला कर दिया. He slapped Hazrat Asma रज़ी अल्लाह ताला अन्हो's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast. उसने हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कान की बाली परे जा गिरी. मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साबित कदम रहीं. And did not reveal the secret, और राज अफशा ना किया. Let's move to the next passage. Paragraph number 5. Her grandfather Hazrat Abu Kuhafa रज़ियल्लाह ताला अन्हा was a disbeliever at that time. उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा साहब ईमान ना लाए थे, साहिब ईमान ना थे. He was very old and had become blind. वो बहुत बूढ़े हो गए थे और नाबीना हो चुके थे. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. Asma, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को तही दस्त और बेयारो मददगार छोड़कर सारी दौलत ले गया है. At this time, she instantly ran to a corner of the home. इस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन घर के एक कोने की तरफ लपकीं. She gathered some pebbles. उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी कीं and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. और उन्हें उस जगह रख दिया जहाँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद अपने पैसे और जवाहरात रखा करते थे. She covered it with a piece of cloth. उन्होंने उसे कपड़े के एक टुकड़े से ढांप दिया. Come grandfather, दादा अबू इधर आइए. Look, देखिए, he has left all his for us. वो अपना सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं, या वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. उन्होंने उस कपड़े को छुआ और ख्याल किया कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है. His concern was alleviated. आपकी तशवीश जाती रही. And he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह ताला अन्हा had left all his wealth at home. और उन्हें ये जानकर इत्मीनान हो गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी सारी दौलत घर पर छोड़ गए हैं. Let's move to the 6th passage. Paragraph number 6. Hazrat Asma Raziyallah Ta'ala Anhu was amongst the early few who accepted Islam. Hazrat Asma Raziyallah Ta'ala Anhu उन चंद अव्वलीन में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. She was the daughter of Abu Bakr al-Siddiq Raziyallah Ta'ala Anha. आप हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी थीं. एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुतेली बहन थीं. शी वॉज़ वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा एंड मदर of Hazrat Abdullah bin Zubair रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा थीं. She died at the ripe old age of about 100 years. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में रहलत फरमाई.
Dear ones, actually, we do not write such words for these holy personalities. Like died means we are not going to say here like वो फौत हो गई या उनका इंतकाल हो गया. The gentle words are used for them. So we are going to say that rehlat farmai, and ripe old age means pukhta umar. Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallah Ta'ala Anha used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted. Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallah Ta'ala Anha कहा करते थे कि उन्होंने किसी शख्स को अपनी खाला हज़रत आयशा Okay, I guess let's first complete the English sentence. Otherwise, it would be difficult for you. Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallah Ta'ala Anha used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha Raziyallah Ta'ala Anhu and his mother. Alright, let's translate it now. It would be easier for you to understand now. Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallah Ta'ala Anha कहा करते थे कि उन्होंने किसी शख्स को अपनी खाला यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अपनी वालदा से ज़्यादा सखी और फराख दिल का नहीं देखा. Hazrat Asma रज़ी अल्लाह ताला अन्हो was so generous that she sold the garden inherited after the death of her sister Hazrat Aisha रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सखी थीं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बहन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद वर्से में इनहेरिटेड मीन्स वर्से में मिले हुए बाग को फ़रोख्त कर दिया. शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम पैसा गरीबों और मोहताजों में बांट दिया. नोबडी एवर वेंचर्ड एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हर डोर स्टेप. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दहलीज से डोर स्टेप दहलीज से कभी कोई शख्स खाली हाथ ना लौटा. लेट्स मूव टू द लास्ट पैसेज. पैराग्राफ नंबर 7. हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, जेनरॉसिटी एंड विजडम. हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी हिम्मत, सखावत और दनाई की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा. She had resolute faith in Allah Almighty. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखती थीं. Her life would always be a beacon of light for all of us. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा एक चिरागे राह या मिशले राह रहेगी. Beacon of light is चिरागे राह. You all would know that there is a beacon of light in the sea to show the light to the ships in the night. So if you can relate it, you can understand the importance of Hazrat Asma Razi Allah Ta'ala Anha for us all. Let's move to the next slide. Here is an assignment for you all. I would like you all to go through the glossary words once again and try to use all of them in your sentences. Alright, I hope it would be much easier for you now. And here I wish you all a very good luck for the sentences. Take care.